एवरीवन, स्वागत अछि आपण समस्तिंगर बायोलॉजी लेसन्स विथ कल्याणी ओडिया रे। आजिर सेशन रे आमे करिया को जाउछु सेल थियरी एंड सेल स्ट्रक्चर ए टॉपिक रे आमे क्विक समरी नबा आउ तापरे आमे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिया को जाउछु। ऑलरेडी आमे थियरी पार्ट ता डिस्कस करि सारछु, लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड करि देबी। नुवा जो माने आजि जॉइन करूचंती मु रिक्वेस्ट करबी से वीडियो टा को भी थरे चेक आउट करिया पई। तो आमे आउ किछि देरी न करिकी चलंतु जिबा स्टार्ट करिबा समरी पार्ट ता। आमे फर्स्ट सेक्शन 8.1 को देखि दबा। तो जदि मु पचारली गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गोटे नॉन लिविंग थिंग आ भितरे व्हाट इज द डिफरेंस, आंसर हैला प्रेजेंस ऑफ सेल। तेबे ए सेल टा कोन? सेल हैला तुमरो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। काहे की स्ट्रक्चरल यूनिट कुहा जाए? बिकॉज यूनिसेलुलर हो किंबा मल्टीसेलुलर हो, ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल। फंक्शनल यूनिट कहेंगे कुहा जाए कहेंगे ना ऑल इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने जादरे गोटिए सेल थाए, मल्टीसेलुलर कोन जादरे मोर देन वन सेल थाए। आमे जदि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रो कैरेक्टरिस्टिक देखिबा, what should be the main characteristics? It should be able to survive independently. Second, it should be able to perform all life processes independently. Okay, next point hela anything less than a complete cell cannot ensure independent living। माने कोन? सेल रु किछि भी कम, माने जदि गोटे सेल ऑर्गेनेल नै गलो सेटा सर्वाइव करि परिबनी इंडिपेंडेंटली। दैट इज व्हाई it cannot be considered as a living being। okay, next scientist नेम देखबा। लिविंग सेल को को साइंटिस्ट डिस्क्राइब करथिले? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। न्यूक्लियस को के करथिले? रॉबर्ट ब्राउन। एबे सेक्शन 8.2 दैट इज सेल थियरी देखिदबा। की प्रपोज करथिले सेल थियरी को? टू इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, क्लेडेन इन द ईयर 1839, थियोडर श्वान इन द ईयर 1839। एडी देखो साइंटिस्ट नेम डेट बोथ ता इंपोर्टेंट आउ को फील्ड रे से माने देखिथिले। देखो स्क्लेडेन ता हैला प्लांट्स, श्वान ता हैला एनिमल्स। ओके, स्क्लेडेन कहिथिले कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, श्वान कहिथिले कि एनिमल्स आर composed of cells and their products। additionally तमरो श्वान कौन करथिले? से zoologist थिले, but still से observe करथिले कि cell wall is typical for plant cell। also से plasma membrane को first थरा observe करी थिले। okay, तो जदि original cell theory कहा जिवो स्लेडेन और श्वान को jointly propose करी थिले। limitation of cell theory कौन? it did not explain origin of new cells। okay, सेल थियरी को किए मॉडिफाई करले? रुडोल्फ विर्चाउ। ईयर कोन? 1855। कोन सी स्टेट करले? ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। ता माने कोन? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। ओके, ताहले एबे मॉडिफाइड सेल थियरी कोन? मॉडिफाइड सेल थियरी रो दुईटा स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हैला जहां भी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखुचू दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स or their products। okay, second point hela new cells they arise from old cells or pre-existing cell। ebe ame janichu ki that is through the process of cell division। okay, ebe ame section 8.3 देखिबा जहां दरे ओवरव्यू ऑफ सेल देखा हिची। देखो एठी तमरो प्लांट सेल और एनिमल सेल रो गोटे बेसिक डिफरेंस दिया हिची। फर्स्ट कोन ना प्लांट सेल भितरे तुमरो सेल वॉल थाए, एनिमल सेल्स लैक इट। ओके, तमरो प्लांट सेल और एनिमल सेल भितरे जदि कॉमन देखा जिवो तले प्लाज्मा मेम्ब्रेन थाए आउ किछि सेल ऑर्गेनेल्स भी थाए, किंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिमिटिंग आउटर लेयर फॉर ऑल द सेल्स, बी इट प्लांट, बी इट एनिमल, बी इट बैक्टीरिया। ओके, अच्छा तापरे तमरो न्यूक्लियस कोन? न्यूक्लियस तमरो क्रोमोसोम्स थाए, क्रोमोसोम से तमरो डीएनए थाए, डीएनए टा तमरो हेरिडिटरी मटेरियल। एबे न्यूक्लियस रो प्रेजेंस आउ एब्सेंस रो आधार रे आमे सेल्स को दी प्रकार रे डिवाइड करि परिबु। कोन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स रे तमरो ट्रू न्यूक्लियस देखा जाए ना, दे लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स दे पोजेस अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। आउ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस संगे यूकैरियोटिक सेल्स रे तमरो अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी देखा जाए। ओके, एग्जांपल्स कोन तमरो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एगुडा सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स
जोटा कि तमरा यूकैरियोटिक सेल रे देखा जाए, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक दिस ऑर्गेनेल्स। जदि तुमको पचरा गला नेम अ cell organelle which is present both in prokaryotes as well as eukaryote, answer हबो राइबोसोम। राइबोसोम टा गोटे सेल ऑर्गेनेल जोटा प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करे, लैक करे मेम्ब्रेन, आउ बोथ प्रोकैरियोट आउ यूकैरियोट रे देखा जाए। आउ गोटे जदि क्वेश्चन पचारे जीवो नेम अ सेल ऑर्गेनेल व्हिच लैक्स मेम्ब्रेन एंड इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, आंसर कोन हबो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम टा हमर काद रे हेल्प करे, सेल डिवीजन रे हेल्प करे। तापर देखो सेल साइज एंड शेप रु तमर डेटा गुडा बहुत इंपोर्टेंट। स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल जदि पचरा जीवा आंसर हबो माइकोप्लाज्मा। केते साइज भी तमर पचरा जाई पारे 0.3 माइक्रोमीटर। देखो माइक्रोमीटर को अलगा किछि यूनिट्स रे भी देखा लेखा जाई पारे, तो यू शुड रिमेंबर दैट माइकोप्लाज्मा रो तमर साइज हैला 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल आंसर कोन ऑस्ट्रिच एग। बैक्टीरिया जदि देखिबा what is the range in which they lie, their size lies in the range of 3 to 5 micrometer. Human RBC is about 7 micrometer in diameter। देखो ए डेटा गुडा मने रखियार अछि, बहुत सारा टाइम तमरो मैच द फॉलोइंग आ एमसीक्यूज रे भी आसी पारे। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी जदि पचरा जीवो नर्व सेल हबो। ओके, सेल exists in various shapes and the shape is generally related to the function। हमें देखिथिले आरबीसी रो केमती बाइकॉनकेव शेप तमरो गैसियस एक्सचेंज रे हेल्प करे, नर्व फाइबर्स केमती लॉन्ग एंड ब्रांच हेले इंपल्स ट्रांसमिशन रे हेल्प करे। तो सेल शेप ता तमरो फंक्शन संगे रे रिलेटेड। ओके, एथिरे हमरो समरी पार्ट ता सरी गला, एबे हमें क्वेश्चंस देखिबा। हमरो समरी पार्ट ता सरी जाईची, क्वेश्चंस कोडा देखि दबा। नंबर 1 क्वेश्चन तमरो नीट 2025 रे आसीची, who proposed that all plants are composed of cells। देखो plants जोठी आसीबो आंसर कोन हबो Schleiden। ओके, एनिमल्स हैला Schwann। नीट 2024 रे आ गोटे क्वेश्चन आस्थिला, the statement omnis cellula e cellula means, ता माने कोन omnis माने all, cellula माने cell, e माने from, cellula माने cell। all cells arise from pre-existing cell। देखि दबा को ऑप्शन ता ठीक, every organism originates from cells, no, every cell arise from pre-existing cell। तो आंसर हबो ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नीट 2023 रे आस्थिला, which scientist modified the cell theory by stating that all cells arise from pre-existing cells। तो आंसर कोन हबो ऑप्शन सी रुडोल्फ विर्चॉव। वेरी इजी। नीट 2020 दा क्वेश्चन 4 देखि दबा, which of the following is not a part of the original cell theory proposed by Schleiden and Schwann। देखो तमे क्वेश्चन रे चेक कर देबो कि ओरिजिनल सेल थ्योरी कहिची ना मॉडिफाइड सेल थ्योरी कहिची। ओके, तो ऑप्शन ए हैला all living organisms are made up of cells, एटा तो गोटे पार्ट। cell is the structural unit of life, B is also correct। new cells arise from pre-existing cells, एटा तो original cell theory रो पार्ट नुह, एटा तो मोर विर्चाउ प्रपोज करथिले। त आंसर हो ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को भी तथा भी देखि दबा, organisms are composed of one or more cells, that's also correct। original cell theory एया ही प्रपोज करथिले कि all cells are made up of, all organisms are made up of cells and product of cells। okay, क्वेश्चन 5 देखि दबा नीट 2021 रे आस्तिला, who discovered the nucleus in plant cells। देखो न्यूक्लियस माने रॉबर्ट ब्राउन। ओके, लिविंग सेल के देखिथिला एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, विर्चाउ तमरा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 देखिबा नीट 2020 रे आस्तिला, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कॉर्क सेल्स यूजिंग, कौन होबे आंसर से तबले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो नथिला, सेतला कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होबे आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन 7 नीट 2019 रे आस्तिला, who was the first to observe and describe a living cell। आंसर इज वेरी सिंपल, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, क्वेश्चन 8 देखिबा नीट 2018 रे आस्तिला, which statement correctly represents the contribution of Schwann। Schwann माने फटाफट भाभी दबो zoologist थिले, आउ कोन करथिले all animals are made up of cells। ता छडा से कोन करथिले, ता छडा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिथिले, आउ भी बाहर करथिले कि प्लांट सेल ता टिपिकल गोटे सेल वॉल प्रेजेंट थाए। एबे ऑप्शन गुडा देखि दबा, all plants are composed of cells। okay, all animals are composed of cells,
एटा से कहिथिले cells arise from pre-existing cell एटा तो Virchow कहिथिले न्यूक्लियस और रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करथिले तो ऑप्शन बी एटी आंसर हबो क्वेश्चन 9 देखि दबा नीट 2017 ने आसिला which of the following is incorrect regarding cell theory cell is a basic structural unit एटा तो करेक्ट cell is the basic functional unit eta bhi correct new cells arise from pre-existing cell eta bhi correct cell wall is present in every cell eta wrong because plant cells they have cell wall while animal cells they do not have it okay next question 10 dekhi deba AIPMD 2013 ne asila which of the following is present in both prokaryotic and eukaryotic cell mo kahithili ebe organelle common in both prokaryotic and eukaryotic kon hoba answer hobo ribosomes the protein factory which is non membranous in nature okay multiple choice questions pare ame be dekhi daba AR type questions what is AR type mane assertion reasoning type questions ebe tadre tumara A B C D charta options thai A hela assertion true reason true au reason ta explain koruchi assertion ku B option है assertion true अच्छी reasoning true अच्छी किंतु reason टा correctly explain करनी assertion को okay C option है assertion is true reasoning is false D है assertion is false reasoning is true एबे हमें questions देखिबा question 1 assertion है cell is the basic structural and functional unit of life assertion टा correct अच्छी reason टा देखि दबा every living organism is composed of one or more cells reasoning भी correct अच्छी एबे next देखिबा reason टा assertion को explain करछि कि cell टा basic structural and functional unit एथिले कि कुआ जाउछि because every living organism is composed of one or more cells the answer हबा A both assertion as reasoning is correct reason टा assertion को correctly explain भी करूछि okay question 2 देखिबा assertion देइछि ribosomes occur in both prokaryotic and eukaryotic cells statement टा correct अछि so assertion is correct reason देखि दबा ribosomes are non membrane bound organelles yes reasoning भी correct अछि both are correct किंतु reason कोन assertion को correctly explain करूछि कि ribosomes are non-membrane bound organelles that does not explain its presence in both prokaryotic and eukaryotic cells rather reason ta better way रे lekha hi parthanta ki ribosomes are the sites for protein synthesis that is why they occur in both prokaryotic and eukaryotic cells to amara option kon habo assertion and reasoning both are correct reason does not explain the assertion the answer habo option B okay एबे क्वेश्चन नंबर 3 देखि दबा assertion दिया है जी cells arise by spontaneous generation cells कोन spontaneously generate होंते कि एटा wrong cells तमरा arise करंती from pre-existing cells by the process of cell division the assertion is incorrect reason देखि दबा Virchow stated omnicellular e-cellular yes reason is correct तो answer about option D assertion is incorrect reason is correct okay question 4 देखि दबा assertion दिया है जी prokaryotic cells possess membrane bound organelles prokaryotic cells रे membrane bound organelles present नथांती तो assertion टा तमरा wrong eukaryotic cells possess membrane bound organelles okay reason देखि दबा they contain ribosomes yes prokaryotic cells contain ribosomes eta correct तो assertion is incorrect reasoning is correct answer हबो option D okay match the following type question देखिबा amoeba जदि देखिबा amoeba रा कोन आमे जानिचु irregular shape okay human rbc जदि देखिबा human rbc रो shape कोन biconcave neuron जदि देखिबा they are branched and elongated sperm जदि देखिबा कोन streamlined with flagellum okay next question देखिबा एटी देखो ये टेबल टा बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू रे भी आसी पारे मैच द फॉलोइंग रे भी आसी पारे माइकोप्लाज्मा आमे देखिचे इट इज अ स्मॉलेस्ट सेल तो तार कोन 0.3 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया रेंज सेल साइज रो कोन 3 to 5 माइक्रोमीटर ऑस्ट्रिच एकटा तमरो कोन लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एटा तमरो साइंटिस्ट ऊपर बेस्ड अछि तमे जानिचो रॉबर्ट हुक से कौन करथिले कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व करथिले अंडर माइक्रोस्कोप रॉबर्ट ब्राउन कौन करथिले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करथिले स्क्लेडन प्लांट सेल्स देखिथिले एंड कहिथिले कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विचाउ कौन कहिथिले सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल ओमनी सेलुला ई सेलुला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दबा सेल साइज और सेल शेप ऊपर सेल साइज ता तुमरो कौन हुए वैरीज कंसिडरेबली सेल शेप ता तुमरो रिलेटेड टू फंक्शन न्यूरॉन जदि देखिबो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड ह्यूमन जदि देखिबो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ओके तो एटा तुमरो मैच द फॉलोइंग टाइप सरी गला तो आमे सेल थियरी एंड सेल स्ट्रक्चर ए टॉपिक रो इंपोर्टेंट पीवाईक्यू लाइनर्स आउ इंपोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करी नेचु आशा करूची समस्त को एटा भलो भाबरे बुझी आसीची जदि किछि डाउट रहूची कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिवे आई विल बी हैप्पी टू आंसर ओके आउ थरे रिपीट करूची जदि काहा को थियरी पार्ट देखि नथिबे ताहाले पूर्व वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड करि देबी सेठी आपण रेफर करि पारिबे अच्छा नेक्स्ट क्लास रे कोन हमें पढ़िया को जाउछु नेक्स्ट क्लास मु जेमिति कहिथिली हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रो मोनेरा किंगडम को पढ़िया को जाउछु तो आशा करूची आज रो सेशन समस्त को भलो लागिथिबो इफ यू लाइक द वीडियो फाउंड इट टू बी हेल्पफुल प्लीज do like share and subscribe to my channel thank you everyone have a very good day